years of teaching experience, and she is the director of the HRDC in Devi Ahilya from last 15 years. She is taking care of this center, and under her tenure as a director, she has grown this center to a very comfortable, very cozy, and very welcoming environment at that university for the participants, those who join her from in the different programs, as well as she is very workaholic. She has created a fine, a very good ambience of this HRDC and the hostel that is there, uncomparable and unbeatable. As the Indore is the number one cleanest city, she has created that atmosphere there at the HRDC, and she is the member of the various committees, advisory committees on the panel of the various boards in the different universities of the country, and she is also a member of the NAC peer team review and is a frequent visitor there, and the member of the various committees. She has also she has a vision to contribute in the field of the higher education through the conviction, through her conviction and dedication. She has mentored a lot of teachers, the faculties in the higher education, and has promoted them to use the ICT tools in their classroom and the teaching learning processes, pedagogies, and also she has contributed a lot by giving her inputs as a senior faculty in the policy making at the UGC level at the different stages. And in the various centers, like there is one center of ICT which you have. She has collaborated with IIM, she has collaborated with the MRCs and all, and throughout the country for the various academic exchange purposes. So we welcome you have raised the expectation of the participants. I hope that I am able to do justice. Am I audible, madam? Am I audible? जी, बिल्कुल clearly audible. मेरा slide भी दिख ही रहा होगा because I am not able to see anyone. Screen भी दिख रहा है. Yeah, so at any given point of time, if my slide stops functioning and but like moving, and if I'm not audible, please just let me know so that I can correct at my end, because I cannot see anyone. If at all we are using, because I know that this is our biggest drawback of Google Meet, that you all can see me, but I cannot see. Exactly. So I don't think I can take a lot of time, because we have the limitation. We have to finish this program, this session in 1.5 hours time. Already we have taken 15-20 minutes extra. So without wasting my time and your time, let us begin with this topic which I have been asked to take on, that is student diversity and inclusive education. I just want to ask Shefali ma'am if whether someone else has also taken this topic, or whether I'll be the first one. You will be beginning with this topic. Okay, fine. So thank you so very much for giving this wonderful opportunity, and also to interact with the participants of your MMTTC, that is DPS University. And thank you so very much, ma'am, for your kind introduction about me. As I said, that you have really raised the bar of expectation from the participants' end, and hope that they will not be disappointed. So student diversity, why there's a need to talk on student diversity, and why we are not talking about inclusive education. This is one of the themes which has been given to all MMTTC. 8 themes they have given, and this is one of the important themes, that is student diversity and inclusive education. So in this 1 hour, say 15 minutes time, I'll be covering these points. We'll try to understand what is diversity. We'll see 1 or 2 definitions of diversity. Also, we'll try to understand diversity in Indian higher education. Then how student diversity enriches the learning environment. This is very important, It's basically, if we talk about diversity, we are kind of, criticizing कि इतना diverse group है, इतने सारे लोग हैं, how to reach out to every segment of the society. But to be very truthful, the more diverse the group is in the classroom, more the learning environment becomes more in terms of learning, it becomes quite enriched. So many experiences, so many ideas, so many kind of opinions, are being thrown
by different segments of the students. So it becomes, the learning environment becomes very interesting, and it enriches the learning environment. And then we will be moving on to inclusive education. We'll see the aims and objectives of inclusive education, principles of inclusive education, and then lastly we will check upon the approaches for promoting inclusive education in higher education, especially what are the different approaches of Government of India, that is to promote inclusive education in higher education. So to begin with, let us see what diversity is all about. It says that the practice or quality of including or involving people from a range of different social and ethnic backgrounds and of different genders, sexual orientation. So as you can see that in the classroom also we have both, like especially in co-ed colleges and institutions and universities, unlike Bhagat Singh, Phool Singh, Mahila, Vishwavidyalaya, which is only catering to the female students. But in most of the institutions nowadays, we are having co-ed, this co-ed education is going on. And abhi to aajkal jo hai, third gender ya transgenders bhi hai, they are part of the, say, what do you call it, education institution. That is, even they are taking admissions there in higher education, say, what do you call it, institution or the universities. So when we Sorry to interrupt you, ma'am. Ma'am, will you make your presentation in screen mode? Full screen mode. अभी आपको screen mode पे Left side panel दिख रहा है. Yeah. Is it clear now? Is it more clear? Visible now? Is it on the बिल्कुल विजिबल है. डाइवर्सिटी वाली स्क्रीन चल रही है आपकी. पहली वाली स्क्रीन चल रही है. हाँ. नहीं डाइवर्सिटी. हाँ, डाइवर्सिटी वाली ही स्क्रीन चल रही है. हाँ जी. नहीं, अभी मैंने उसको स्लाइड शो पे मोड पे कर दिया है. So I hope it is more clear in this thing, you know. So we are talking about if in the higher education when we have students from different gender, people from different sexual orientation, you know, like jisko hum log homosexuality bhi bolte hain. If some such students are if they are present in the classroom, then abhi kya hai, there is no age bar. Abhi to kya hai ki you will find even the married say people in the classroom. Age is also has been raised कि भाई हम पहले बोलते थे कि भाई केवल 18 से लेके 25 साल तक के बच्चे ही क्लासरूम में आ सकते हैं, बट अभी तो मैरिड वुमेन आती हैं with say not just married but they are mothers also, and many a times you must have read it in the newspaper कि at the age of say 50 somebody is completing the PhD. So age is also no bar nowadays in the classroom, I mean, to take admission in higher education institution. So age also is there. Disabled groups are there, like visibly impaired groups are there, then physically disabled people are there. इस तरह के भी students हमारे classes में आने लगे हैं. In institutions we are getting some such students in the classrooms. Then income तो है ही है, socio-economic disadvantaged group people, they are coming and taking admissions. पहले तो केवल elite जो group होता था, they used to come and take admissions, but अभी it's open and government is also promoting say, you know, education for this group especially by providing them with the scholarships and free ships and things like that. So इसमें इस तरह के भी students आते हैं जिनकी income जो है which is not at par with the elite group. पहले तो जैसे कहना चाहिए कि the education was only meant for elite group. अब पुराना हिस्ट्री देखिए, जब ब्रिटिशर्स के समय में तो ओनली एलिट ग्रुप या एलिट क्लास के लोग जो थे they used to come and take admissions there in the universities and institutions, but अभी ऐसा नहीं है. Then we are also having students from different religious backgrounds and who are having different spiritual beliefs. So जब इस तरह के wide जो socio economic background के जो students हमारे classrooms में अभी higher education में जो आते हैं, that is what we call it as diversity. Now let us understand the concept of diversity. Means it compasses acceptance and respect. भाई ऐसा नहीं है कि elite class के बच्चे हैं तो इसलिए उनको because पैसे वाले हैं they are coming say in 4-wheelers or 2-wheelers, so only they get the respect and acceptance in the classroom. No, we actually diversity का मतलब ही यही है कि भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के students हमारे class में, but then they all demand respect and acceptance is also part of it, the diversity. You cannot even like in the classroom if socio-economic disadvantaged group students are there,
yes, SC/ST group के students हैं, we cannot make them sit up apart. They are very much part of the classroom. उनको हमें respect भी देना है, उनको accept भी करना है, and it means understanding that each individual is unique and recognize our individual differences. Naturally, when the student is disabled, suppose कि is visually impaired student है या कोई disabled student है, so वो तो different है ही हमसे. He is a different person in terms of he is a unique in terms of कि उसकी he is not able to see, he is using a wheelchair to come to the classroom, so he is unique. And we have to say kind of accept some such students also in the class. We have to recognize that each individuals are different. Individual differences and similarities actually add to the richness and texture of the educational experience. क्योंकि teachers के लिए भी थोड़ा सा challenging जरूर होता है, but then they have their own set of experience. They bring a lot of different kind of experience in the classroom. क्योंकि जो एक physically abled student है उसकी सोच अलग रहती है, उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच भी अलग होती है, उनके सीखने का स्टाइल इज आल्सो डिफरेंट. सो दे ब्रिंग लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर, बट दे ब्रिंग richness and texture to the classroom of our higher education. So that is what is the diversity is about, that in spite of from different gender, in spite of coming from different ethnicity, in spite of different age group, culture, disability, sexual orientation, religion, socioeconomic status, they actually are part of higher education. So that is what brings the uniqueness in the higher education, and not only in higher education but even in school education. School education में फिर भी थोड़ा सा different है, like थोड़ा सा अलग कर देते हैं. But they say that no, now we are talking about inclusive education. They actually should be part of, everyone should be part of the group. And it's only one group. In spite of all these differences in terms of like what we talked about, सब बराबर है, सबको at par treat करना है. और हम लोग वैसे भी अलग हैं, like even we are physically abled people, but I am unique. I am different from you. You are different from me. मेरी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, मेरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग तरीके का है आपसे, मेरे रिलीजन मेरा अलग है. क्योंकि लाइक हो सकता है कि क्लासरूम में कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के होंगे, कोई बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं. ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम. So we are different from each other. We are unique, but we have to accept each other. We have to give respect to each other. Even though you are from different, you are following a different religion, but we have to respect your religion also. This is what is the diversity is in the classroom. Now, some one or two definitions we'll quickly see. एक तो एक general diversity का जो वो है definition है. It says the inclusion of individuals representing more than one national origin, color, religion, socioeconomic stratum, sexual orientation. In US or Canada or maybe some other countries, you'll find कि वहाँ हर तरह के different nationalities के लोग हैं. इन वहाँ को browns बोलते हैं. We are called as brown. We are termed as brown people. And जो वहाँ के लोग हैं वो तो खैर हैं ही white. And if somebody is from African origin तो उनको black बोला जाता है. So even national originality भी है जो diversity का ही part है, कि they are from different nationality. उनके colors अलग हैं, उनके religion, उनके religious faith अलग है, उनके socio-economic stratum अलग है, उनकी भाषाएं अलग हैं. Even on the basis of this thing, language, what they are speaking or what they speak, वो भी diversity का ही part है. So this is what is diversity is about, that inclusion of individuals representing more than one national origin, color, stratum, sexual orientation, that also includes that also includes marital status, everything. This is all part of university defines learner diversity as diversity usually is ethnic background of ethnicity, especially जब हम वहाँ पे जो ब्लैक हैं उनको थोड़ा सा रेसिज्म की प्रॉब्लम्स आती हैं. इवन इंडियंस को भी रेसिज्म की वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड इज टोटली डिफरेंट.
And anytime that a student is different from the rest of the students in a class, that student is diverse. Even एक भी यदि student यदि है वो कहीं दूसरे ethnic उसके background का है, तो definitely it is bringing diversity in the classroom. So diversity can relate to gender, sexual orientation. It's the same thing: socioeconomic status, ethnicity, country of national origin. So this is a definition given by Oklahoma State University, which is there in United States. So I hope that it is more clear to you. And why we are talking about diversity, because पहले तो जो था कि हमने आपसे in the beginning I told you कि पहले तो elite class के लिए ही सिर्फ class के लिए ही केवल education, higher education होती थी. But अब क्या है? Now it has become a massification. Massification जबकि it is open now, the education is open for everyone, and it is a right of everyone to be part of education. And therefore now we are talking about diversity. पहले तो बड़ा इस तरह की diverse group नहीं होते थे हमारे classrooms में, higher education में नहीं होते थे. But लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी higher education में भी, and government is promoting, they are giving so many, they have brought in so many number of schemes so that every person can be a part of higher education. And that is what NEP is also talking about. पहले NEP में जब ये आपको मालूम है, अभी आपको पता है what is the gross enrollment ratio of our country? GER कितना है अपना अभी higher education में? Anyone? Participants, can you hear me? Yes, ma'am. We are hearing you, ma'am. Yes, ma'am. जवाब भी दीजिए फिर. रफी सही आइडिया तो दीजिए, आंसर करिए. Anyone? It is 27%. Right now, our GER is 27%, right? And जो Government of India है, उनका ये कहना है कि by 2030, by 2030, they want to bring, increase this GER to 50%. जो अभी 27% है, जो अभी 27% है, उसको वो 50% में करना चाहते हैं, दे दीजिए वहां पे, तो उसको 50% तक लेके जाना चाहते हैं. So आप सोचो कि अभी तो केवल जो है it is only 27%, and कितना ambitious ये है, मतलब कहना चाहिए कितना ambitious plan है NEP में कि 50% लोगों को वो जो है चाहते हैं कि that they become part of higher education. Why? Because if you want to grow economically, जो economic growth की जब हम बात करते हैं, तो हम देखिए अब जब when you compare developed countries from our country, so why we are behind? Because not that everyone is educated भी है, और अब vocational education की भी बात कर रहे हैं कि education is one part. Not everyone can afford higher education. तो इसलिए तो बहुत से ऐसे students के लिए scholarships और free ships भी Government of India और state government, they are promoting that these students also should become part of higher education. तो हम इनको इस तरह की भी facilities दे रहे हैं बच्चों के, students के लिए. तो 27% से 50% तक यदि लेके आना है, so naturally that आपको उनको facilities तो provide करनी पड़ेगी, and then you will have different kind of people in the classroom, and it becomes all the more challenging for the teachers as to how to deal with some such diverse group of students. क्योंकि हमारे क्लास में केवल जैसे इंग्लिश बोलने वाले ही नहीं रहते, हमारे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो जिनकी स्कूल एजुकेशन मराठी में होती है, जिनकी स्कूल एजुकेशन बंगाली में हुई होती है, या फिर हिंदी में हुई होती है. तो फिर कैसे उनको आप टैकल करते हैं, कैसे डील करते हैं इन सब सारे स्टूडेंट्स को, ये भी एक बड़ा ही चैलेंजिंग वो है टीचर्स के लिए. दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, कि भाई कैसे हम सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, सबको एकेडमिक एंड पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सो दैट GER भी बढ़ जाए, एंड फिर सारे स्टूडेंट्स जो वहां पे पढ़ेंगे naturally कम से कम if they are not able to get employment, तो कम से कम they can start their own business, they can earn their revenue, they can earn their bread and butter. So that is why we need to understand all the more this about diversity in higher education. So it has grown, as I said, Indian higher education has grown considerably. It has shifted from elite group to a massification stage, and by 2021 the number of students in higher education in India has grown to 4.41 crore. This is like
वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट अभी हायर एजुकेशन सिस्टम है विच इज देयर इन इंडिया ओनली। इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, दे हैव टेकन एडमिशन एंड अभी उनको उसको जो नंबर है उसको और बढ़ाना है। अभी तो क्योंकि 27% है और 50% हम उसको, हमारी जो मिशन है उसको हमको 50% तक लेके जाना है। So over the years, the enrollment of students from all sections of society, particularly from weaker and disadvantaged sections, especially girls also, क्योंकि पहले देखिए गर्ल्स को हायर एजुकेशन में स्टेप आउट करने के लिए भी उनको जो है सोचना पड़ता था। स्पेशली हम यदि अपने दादी और नानी के समय का टाइम देखें तो हमारी दादी और नानी वगैरह हायर एजुकेशन में नहीं जाती थी। हम अपनी मदर का ही यदि अपना एग्जाम्पल दें, देखिए तो यदि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो बहुत बहुत बड़ी बात होती थी कि अरे उस शादी हो गई, या मतलब सॉरी इतना पढ़ाई कर ली तो इनकी शादी कैसे होगी, क्योंकि गर्ल्स यदि इतना पढ़ लेंगी तो उनको उनके बराबर का ग्रूम नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा। तो इसलिए लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं, और वैसे भी उनको बोला जाता था शी इज गोइंग टू गो टू अनदर फैमिली, सो व्हाई शुड वी पुट हर इनटू कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो ये जो है इवन फीमेल्स वर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। यदि हम आज से 30 साल पहले का अपना इतिहास देखें तो ही बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। And then SC/STs and linguistic, ethnic, religious minorities, सबके सब अभी देखिए कि you have, मतलब हर तरह के जो बच्चे हैं हम आजकल अपने क्लासरूम्स में हम उनको देखते हैं। You know, like अभी तो क्या है, पार्शियल जो ब्लाइंड है, पूरा ब्लाइंड है, वो ऐसे भी बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि दैट they will have a different schools and colleges for them. स्कूल्स तक तो ठीक है, बट अब दे आर ऑल्सो बिकमिंग पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, इवन दे आर टेकिंग एडमिशन। तो हम उनको फैसिलिटी देते हैं। यदि आप देखिए हम तो जैसे नैक वगैरह में भी जाते हैं तो पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, तो वो बताते हैं कि भाई मैडम हम स्क्राइब्स देते हैं इनको लिखने के लिए, एग्जाम राइटिंग के लिए, रैम्स बनाते हैं इनके लिए। स्पेशली वी आर प्रिपेयरिंग अ डिफरेंट, प्रिपेयरिंग तो नहीं कर रहे, वी आर कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वॉशरूम फॉर सच स्टूडेंट्स सो दैट दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अरेंज किए जा रहे हैं, so that the content is converted into audio content, and some such facilities are also being provided to the students. Why? Only so that they become part of the higher education system of our country. So owing to the increased inflow of students from weaker disadvantaged sections, classrooms and universities are becoming increasingly diverse. There has always been diversity in the classroom, but in today's society, it is important to embrace this diversiness and make it positive and make a positive use of it. Diversity is essential to have better relationship with one another. See, why diversity is important? Because it says that we can have a better relationship with one another. Because जब हम society में जाते हैं, when we are working, so that is what we find even at the workplace. We have teachers who are from different ethnic and religious background. तो क्या हम उनको accept नहीं करते हैं? Are we not accepting them? यदि कोई Muslim lady Muslim professor है, so are we not accepting that Muslim professor? Or are we not accepting the Christian professor? No, we are accepting all kind of people. हमारे यहाँ तो बल्कि ऐसे भी teachers हैं who are blind. So just because a teacher is blind, तो ऐसा थोड़ी है कि वो क्लास नहीं ले सकता. Even that blind teacher is also taking a class there. So that is why it is important, that is to give respect to one another. So when we learn this kind of giving respect to one another in the classroom, so when they go to the society, तो भी तो वही चीज होती है ना. And it is a kind of, यहाँ पे तो they are kind of learning. यहाँ पे तो सब learn कर रहे हैं. They are learning. Students क्या है? They are in a learning phase. अब जो हमारी रिलेशनशिप इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ में भी जब अच्छी होगी, तो नेचुरली सोसाइटी भी ज्यादा मोर इट विल बी मोर हार्मोनियस, इजंट इट? कि जब हर तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ता है, आपको उनके रिलीजन को भी, उनके रिलीजियस बिलीफ को भी, सबको रिस्पेक्ट करना पड़ता है. एंड इट कैन बी रियली डिफिकल्ट ऑल्सो टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी, especially when people have preconceived prejudices. ये बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ब्लाइंड है तो उसको भी हमको जो है लगता है कि कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दें, कुछ ऐसा ना कर दें. हमको बड़ा कॉशियसली उनके साथ में डील करना पड़ता है. और कभी ये भी लगता है कि अरे SC/ST है, उनको तो ये आता ही नहीं होगा. ये हमारे सब
preconceived prejudices होते हैं, so it becomes all the more difficult, so that is what we actually learn, when we are in the higher education institution. This is what we learn. जब diverse group रहता है तो हम देखते हैं कि भाई हर तरह के students हैं, and so we actually are learning to have a better relationship with one another, and that finally when we come out of the institution, so that is it comes handy, हमको बड़ा वो रहता है कि चलो भाई हम इस तरह के लोग भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उनके रिलीजियस बिलीफ्स अलग जो हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, यदि कोई डिसेबल्ड है उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको भी हमारे साथ काम करना है, और हम एक दूसरे की पूरे ख्याल रखते हुए और मतलब एक अच्छा हार्मनी में कम्युनिटी में रहते हैं. और this is what is important. This is what actually diversity helps to, I mean, it teaches us. It teaches us कि that हम दूसरे जो हमारे साथ के लोग हैं उनको हमें किस तरह से रिस्पेक्टफुली उनके साथ काम करना है और किस तरह से हमें उनके साथ डील करना है, बात करना है, एवरीथिंग. और अब यदि उस तरह से आप ना भी देखो तो भी देखो आप, इफ यू जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर फैमिली में भी हम एक दूसरे से अलग है. वी आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हमारे खाने की हैबिट्स अलग है. Maybe if I like North Indian, my kids, they don't like North Indian food and they like, say, South Indian food. किसी को non-veg अच्छा लगता है, किसी को veg अच्छा लगता है, किसी को अलग तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, किसी को किस तरह से रहना अच्छा लगता है. So that is what we learn even at home also. That is to give respect to each other. Because हमें सबके साथ relationship अच्छी रखनी है. We need to say kind of be in harmony with each other. तो घर पे भी हम सीखते हैं, लेकिन higher education institutions में, classrooms में भी this is what we learn. ऐसा नहीं है कि SC/ST वाले students को दूर बैठा दो, उनसे बात ना करो, जो कि पहले के समय में होता था, but not anymore. This is what we have to learn to embrace each other, like that, and by giving respect to each other. The diversity in Indian higher education यदि की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही थोड़ा सा बताया था कि जेंडर हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो सकते हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजन हमारे अलग होता है, मैरिटल स्टेटस भी हमारे अलग हो सकते हैं. इफ somebody is married, somebody is even a divorcee, somebody is even say what do you call it, single, and somebody is unmarried, say person there in the classroom. इस तरह का भी मैरिटल स्टेटस हो सकता है. Then we are having different geographical location, region. बेस्ट एग्जाम्पल इज JNU. आप देखिए जितने तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उतने ही कश्मीर के बच्चे, उतने ही साउथ के बच्चे. सो जोग्राफिकल लोकेशन, रिलीजन इज ऑल्सो डिफरेंट. हमारी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड डिफरेंसेस हो सकता है. देयर आर सम गिफ्टेड पीपल, टैलेंटेड पीपल, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. Some people, some students you'll find, who is having some speech related problems, hearing related problems, cultural racial differences. So इस हर तरह के जो students हैं, you can expect them in the classrooms of higher education. Now let us move and understand meaning of learner diversity. एक तो हो गया, आपने पहले diversity समझ लिया. Then learner diversity is also there. Classrooms are diverse in terms of the types of students and the ways in which they learn. This is very important. क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज से सीख के आ रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है अलग भी हो सकता है, क्योंकि सबको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं. यदि कोई बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में, यदि वो सपोज कि कोई ऐसे स्कूल से आ रहा है जहाँ पे उसके पास कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं है, तो उसको तो नेचुरली कंप्यूटर चलाना भी नहीं आएगा. तो फिर उसका तो एक्सपीरियंस अलग है ना, उसका एनवायरनमेंट वो अलग तरह के एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, तो नेचुरली उनका लर्निंग स्टाइल भी अलग होगा. सो दिस बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग फॉर द टीचर्स कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कारण से फॉर सम रीजन दे आर लैगिंग बिहाइंड, तो हम लोग इसीलिए आप देखिए क्लासेस जब हायर एजुकेशन में जब आते हैं तो आपने कई बार सुना भी होगा, और मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग इट ऑल्सो, दैट वी आर ऑफरिंग रेमिडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स. वीक स्टूडेंट्स के लिए हमें रेमिडियल क्लासेस भी अरेंज करनी पड़ती है. यदि कोई वर्नाक्युलर लैंग्वेज से आ रहा है तो हमको वी हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ लैंग्वेज लैब ऑल्सो, क्योंकि सो दैट दे बिकम एट पार विद अदर स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमें उनकी लर्निंग की स्टाइल्स, उनकी एबिलिटीज के कारण हमको उस तरह से उनको पढ़ाना पड़ेगा, so that they are not left behind. So that is what we kind of say, understand, or this is what is the meaning of the learner diversity, because the way they learn in the classroom, diversity applies to learning styles,
background, educational backgrounds, their language, and support at home. And it also means valuing the differences between people and the ways in which those differences can contribute to a richer, more creative, and more productive working environment. Now, suppose if I give you an example over here, we say that अच्छा गांव से आया है या किसी ट्राइबल रिमोट एरिया से आया है, सो इवन हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसे बच्चों को, कि इनके पास जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे जगह से आए हैं. बट बिलीव इट और नॉट, if we compare some such students with the normal students जो city के students हैं, they bring much more richer experience, क्योंकि वो जो ऐसे schools पे पढ़ते हैं और साथ में वो काम भी करते होते हैं. हमारे यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया है और वो स्कूल में हैं तो ठीक है, हम एज अ इंडियन पेरेंट्स हमारी ऐसी टेंडेंसी रहती है कि वो जो स्कूल किया तो कॉलेज में भी जाएगा. हमारे बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ी है कि दैट दे गो एंड से वर्क से समवेयर. मार्केट में भी मतलब हम लोग जैसे अब तो खैर काफी बच्चे ऐसे हमको मिलते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं बिकॉज दे वांट टू से काइंड ऑफ सस्टेन देमसेल्व्स. तो वहां पे भी पढ़ते हैं और थोड़े पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर दे कम बैक एंड दे से काइंड ऑफ learn there in any of the institution, higher education institutions. मतलब उनकी एक पॉकेट मनी उनको मिलती है. तो यदि हम उस तरह के स्टूडेंट्स को देखें तो दे ब्रिंग मोर नॉलेज, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारे जो रेगुलर बच्चों से ज्यादा है. दे कैन कंट्रीब्यूट मोर, दे आर मोर क्रिएटिव, मे बी इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है. सो देयरफॉर वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट कि भाई इनके उनको just not language का problem हो सकता है, language could be one of the barrier, but उनके पास बहुत experience रहता है and they are more productive. They bring lot of knowledge in classrooms, and if whenever we have this kind of a discussion class में कोई discussion करे, कोई debate करे, तो यदि language को छोड़ दीजिए, so naturally they are having more say, they bring lot of knowledge in the classroom. एंड हमारे स्टूडेंट्स जो है वो तो ठीक, हमारे बच्चे जो हैं वो तो ठीक है, बुकिश नॉलेज है, उनके पास सारी एसेसरीज हैं, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, बट वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है दे आर स्टिल नॉट हैविंग दैट मच ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज व्हाट अ स्टूडेंट हु इज कमिंग फ्रॉम ट्राइबल एंड रूरल एरिया एक्चुअली कैन ब्रिंग. तो इस तरह का जब डाइवर्स ग्रुप रहता है तो नेचुरली उनकी लर्निंग तो खैर अलग होती है, बट बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन वो लेके आते हैं जिसके बारे में हमारे बच्चे खुद समझ भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते. सो वी एक्चुअली नीड टू वैल्यू द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल. दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ learner diversity. The concept of diversity encompasses acceptance and respect. As I said कि भाई गांव से है, ट्राइबल एरिया से है, तो इसका ये थोड़ी मतलब कि उसको अलग क्लास में बैठा दूं, नहीं, वो भी हमारी क्लास में बैठेगा. And then we to give respect also, and we have to accept these kind of students also. It also means understanding that each individual is unique, and by recognizing these individual differences and similarities, we add to the richness ultimately and texture of the education experience. How student diversity enriches the learning environment. This is very important. कि किस तरह से जो है learning environment की जो enrichness है वो हमारी student diversity से कैसे बढ़ती है. क्योंकि देखिए स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस इज enhanced by diversity, comparative perspective which sharpens assessment of their own attitudes, values and behavior. जैसे हम अपने घर की यदि एग्जाम्पल दें, क्योंकि नेचुरली घर में तो क्या होता है वहां पे इवन दो वी आर डिफरेंट, बट हमारा जो अवेयरनेस है, हम अपने तरह के लोगों से ज्यादा बात करते हैं, उठते बैठते हैं. लेकिन यदि कोई इस तरह से, हमारे एटीट्यूड्स अलग होते हैं, हमारे वैल्यूज अलग होते हैं, हमारा बिहेवियर अलग होता है. पर सपोज की क्लास में कोई ऐसे ट्राइबल एरिया का कोई स्टूडेंट आ गया, या वो हमारे स्पेशली if you see I give you the example of Devi Haryana, हमारे 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राइबल बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं. वी आर केटरिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज. तो उनके वैल्यूज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनका खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सब कुछ अलग है. तो ये जो है इनको वी हैव टू काइंड ऑफ गिव रिस्पेक्ट टू दीज स्टूडेंट्स ऑल्सो. उनके एटीट्यूड्स हमारे एटीट्यूड से बहुत फर्क होते हैं, उनके वैल्यूज, उनके बिहेवियर हमारे नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत अलग होते हैं. बट देन at the same time, students actually they actually have self awareness, is enhanced by diversity. Their awareness is enhanced by diversity, by comparative perspective, and उससे क्या होता है कि naturally जब उनके attitudes और values and behavior अलग होते हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं एक
टॉलरेंस की भी जो चीज है, जो हमारे आजकल धीरे धीरे कम हो रही है, हम एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते, तो ये टॉलरेंस भी हमारा बढ़ सकता है when the diversity is there in the classroom. Student diversity contributes to cognitive development, and by gaining perspective of peer, learn from other students aside from the instructors. जो peer learning की भी बात होती है, not that we learn from the teachers, but we learn from each other. Student have a role as responsible member of the society. जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि how we are learning in the classroom. ये classroom जो है एक आपके लिए पायलट प्रोजेक्ट के जैसे काम करता है, बिकॉज व्हेन यू गो आउट इन द एंड वर्क इन द सोसाइटी, वहां भी मैंने आपसे बोला कि हर तरह के हर सम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यू हैव टू so ये सारी चीजें तो हमें प्रिपेयर ही करती हैं इन द क्लासरूम, एंड फिर जब हम रियली में जब जाते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हम हार्मनी रहेगी। तो यही बच्चे जब when they go out in the society, they actually can bring harmony even in the society. So therefore it is to say kind of respect each other. We kind of not only respect each other, we accept each other, and we learn to grow together in harmony. And वो कैसे एक दूसरे के साथ में each other. Individual. जैसे आपको एग्जांपल मैंने घर का ही दिया कि this is about talking about diversity, equity and inclusion. So diversity is about having different set of people